everybody, and welcome back to my channel. Do it yourself always. I'm Vaishali with another exciting DIY project for all the creative people out there. Here I'm using a hook जो कि मैंने एक old belt से निकाला है. I'm using a white yarn here to make a feather. इस तरह से एक knot देंगे हम हुक में. टेप से आप हुक को ऐसे फ्लैट सरफेस पे फिक्स कर लीजिए. फेदर बनाने के लिए यार्न को कुछ इस तरह से फोल्ड करके हम मेजर करेंगे एंड देन इक्वल स्ट्राइप्स बना लेंगे. All we need to do is just fold it like this and जो भी equal stripes है उसको कट कर लेंगे. So कुछ इस तरह से हम नॉट बनाएंगे फेदर बनाने के लिए. अब हम इसको फेदर के शेप में कट कर लेंगे. इस तरह से हमको बेस बनाना है हैंगिंग के लिए. ये बेस मैंने जो ग्रिल स्टिक्स होते हैं उसको यूज़ करके बनाए हैं. हम यहाँ पे 8 ग्रिल स्टिक्स लेंगे एंड उसको इस तरह से अरेंज करके स्टिक कर देंगे. हमको ये आर्टिफिशियल लीव्स का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे. और वाइट कलर के पेपर रोजेस मैं यूज़ कर रही हूँ. कुछ मीडियम साइज़ के आर्टिफिशियल लीव्स भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. और ग्लू गन का यूज़ करके हम ये सब फ्लावर्स एंड लीव्स को स्टिक करेंगे. सो फर्स्ट वी नीड टू स्टिक द फेदर एंड देन इसके बाद हम फ्लावर्स को स्टिक करना स्टार्ट करेंगे. बर्ड्स के लिए मैंने पॉम पॉम बॉल्स यूज़ किए हैं. Let's take a final look how this hanging will look like. So do you think is there anything prettier than this bunch of flowers? That too roses. So decorate your doors with this hanging and I'm sure your visitors and the passerby will instantly take a look at your door. Just don't think about the doors only, you can use this beautiful hanging for your wall also.
So here is a beautiful wall decor for you. Here I'm showing how you can use this beautiful hanging to decorate your walls. I mean, doors are such part of your home that's really easy and cheap to decorate. I believe creating welcoming front door decor is such a sweet gesture for your visitors. So this is it for today. I hope you liked the video, and I want to thank you all for your words of encouragement and support. I'll be back soon with something exciting in my next video. And then do consider subscribing my channel. I'll see you all soon.